Hello students, a very good morning to everyone. This is the beautiful world of science and technology. I welcome you all for the next session of our laws of motion. In the last session already we started our physics part. So what is the meaning of physics? What are the importance of physics? And what is the meaning of motion? Uniform motion, non-uniform motion, oscillating motion, vibrating motion, and the circular motion already we discussed in the last session. So now in this session we are going to discuss about the displacement, speed, velocity, acceleration and the type of acceleration. तो आज का जो सेशन रहेगा इस सेशन में हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कशन करना है, स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में और एक्सेलरेशन के बारे में क्या है डिस्कशन करना है। पिछले क्लास में हमने डिस्कशन किया था इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स बोले तो क्या, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस रहेंगे और हमारे लाइफ में फिजिक्स का क्या रोल है। मोशन बोले तो क्या, उसके अलग अलग प्रकार के टाइप्स के बारे में हमने क्या है ऑलरेडी क्या है डिस्कशन किया। तो आज का जो सेशन रहेगा काफी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसमें हम सीखेंगे डिस्प्लेसमेंट बोले तो क्या, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सो स्टार्ट टुडेस सेशन। फर्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम इनिशियल point to the final point of a moment of the body. You see, it is the shortest distance between the initial point of the body to the final point of the body of a movement. जो बॉडी से मूवमेंट करती है शॉर्ट डिस्टेंस तक, उसका जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो उसके बीच में डिस्टेंस रहेगा उसको हमें क्या कहना है, तो डिस्प्लेसमेंट कहना है। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ initial point to the final point of a moment of a body. Body का movement from a initial point to the final point is called the displacement. It is a vector quantity. ध्यान में रखिए, displacement is a vector quantity. It has magnitude as well as direction. वेक्टर क्वांटिटी का मीन्स क्या होता है, जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रहता है उसको हमें क्या कहना है, तो वेक्टर क्वांटिटी कहना है। The SI unit of displacement is a meter. उसका जो SI यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा, वो तो मीटर रहेगा। and CGS unit is a centimeter. Understand? Displacement is a vector quantity. Displacement has both magnitude as well as a direction. The SI unit of a displacement is a meter and the CGS unit is a centimeter. Understand everybody? Displacement, it is the shortest distance between the initial point to the final point of the moment of the body. Initial point to the final point of a moment of a body is called as the displacement. Displacement is a vector quantity. It has both magnitude as well as a direction. The SI unit of a displacement is a meter and the CGS unit is a centimeter. Listen, देखिए displacement. It is the shortest distance down. It is the shortest distance. It is the shortest distance from initial point to the final point of movement of the body. Next one, it is a vector quantity. It
is a vector quantity. Next, it has magnitude and direction. The SI unit of a displacement SI unit of displacement is meter and CGS unit is centimeter. Understand everybody what is the meaning of a displacement? Now the next one, distance. our discussion कर लेंगे distance के बारे में. Next one is a distance. अब तक जो हमने पढ़ा displacement. Now discuss about the distance. Now see distance. The length between 2 points is called as the distance. ध्यान में रखिए. The length between 2 points is called as the distance. दो पॉइंट के बीच में जो लेंथ रहती है उसको हमें क्या कहना है? तो डिस्टेंस कहना है. It has only magnitude and it is a scalar quantity. ध्यान में रखिए. Distance is a scalar quantity because it has only magnitude, no direction. डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी की तो उसको क्या बोले? मैग्नीट्यूड रहते हैं, लेकिन उसको क्या तो ना क्या है? डायरेक्शन. द एसआई यूनिट इज मीटर एंड द सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर. उसका जो एसआई यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा? मीटर रहेगा एंड सीजीएस यूनिट क्या रहेगा? वो तो सेंटीमीटर. अंडरस्टैंड? द लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस. इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी and the SI unit of a distance is a meter and the CGS unit is a centimeter. Listen. तो देखिए distance के बारे में. काय बोलो? निकल लगे. तो देखिए the length between the length between 2 points is called distance. It is scalar quantity. Scalar quantity. It has only magnitude. It has only magnitude. The SI unit is meter. The SI unit is meter and CGS unit is centimeter. Understand? Next one is speed. हम डिस्कशन कर लेते हैं स्पीड के बारे में. Next one is the speed. Next one is speed. Now see, speed the distance covered by a body in a unit time. एक सौ टाइम में एक बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करती है उसको हमें क्या कहना बोलो तो स्पीड कहना है. स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन अ यूनिट टाइम.
Now see the SI unit is a meter per second and the CGS unit is a centimeter per second. तो उसका SI यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा मीटर पर सेकेंड रहेगा और CGS यूनिट उसका क्या रहेगा तो सेंटीमीटर पर सेकेंड रहेगा. Listen. Now see. Speed is the distance distance covered by a body in unit time. The SI unit is meter per second and CGS unit is centimeter per second. Understand? Speed is the distance covered by a body in a unit time, and the SI unit of speed is a meter per second, and the CGS unit is a centimeter per second. Next one, see now velocity. Next one is velocity. Velocity is the distance covered by a body in a unit time. I'm going to keep velocity is the distance covered by a body in a unit time. The SI unit is meter per second and CGS unit is a centimeter per second. It has both magnitude and the direction. It is a vector quantity. I'm going to keep velocity is a vector quantity, and the formula of velocity is equal to displacement by time. Listen. Velocity is the distance covered by a body in a unit time. The SI unit of velocity is a meter per second and CGS unit is a centimeter per second. It has both magnitude as well as a direction. It is a vector quantity, and the formula of velocity is equal to displacement by time. Okay, velocity is the distance covered the distance covered by a body in a unit time. Velocity, the distance covered by a body in a unit time. Number 2. The SI unit is meter per second and CGS unit is centimeter per second. It has both magnitude and direction. It is vector quantity. Velocity is equal to displacement by time. Listen, velocity is the distance covered by a body in a unit time. The SI unit is a meter per second and the CGS unit is a centimeter per second. It has both the magnitude and the direction. It is a vector quantity, so velocity is equal to
displacement by time. Listen. Next one, see acceleration. Next one is acceleration. It is the rate of change of velocity with respect to time is called as acceleration. Listen. It is the rate of change of velocity. The rate of change of velocity with respect to time with respect to time is called acceleration. Is called acceleration. So acceleration is equal to changing velocity by time. Listen. It is the rate of change of velocity with respect to time is called as acceleration. So acceleration is equal to change in velocity by time. Listen. Now next one, types of acceleration. Next one is types of acceleration. There are two types of acceleration. One is a uniform acceleration and next one is a non-uniform acceleration. तो acceleration की क्या होता है, दो प्रकार हैं. एक है उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नेक्स्ट वन इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ acceleration. There are two types of acceleration. One is a uniform acceleration. Uniform acceleration. Now see, and next one is a non-uniform acceleration. Non-uniform acceleration. Listen, there are two types of acceleration. One is a uniform, the next one is a non-uniform acceleration. Now, first one is uniform acceleration. If the velocity changes by equal amounts in an equal interval of time, the object is said to be in a uniform acceleration. कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की इक्वल इंटरवल में इक्वल टाइम में अगर उसका क्या हो तो इक्वल अमाउंट और इक्वल इंटरवल में उसका अगर वेलोसिटी चेंज होता है तो उसको हमें क्या कहना है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहना है. नाउ सी, इफ द वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इफ द वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स, the object is said to be non-uniform acceleration. अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर अनइक्वल अमाउंट्स में इक्वल इंटरवल में अगर वो कंप्लीट हो जाती है तो उसको हमें क्या कहना है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ओके, let's stop here. We continue on the next session.
So in this session already we discussed. आज के सेशन में हमने बहुत important discussion किया displacement, distance, speed, velocity, and the acceleration. Okay, we'll stop and we'll continue on the next session.